Hello students. Today again we are here with our second chapter, that is nutrition in animals. So what do you mean by nutrition? Nutrition means the process of intaking of food, its digestion, absorption and utilization. Why I am again revising the definition? Because today is the revision class in which we are going to revise whatever we have done in past 3 days. So yes, in revision we will do all the things we have done in 3 days. Nutrition, what do you mean by nutrition? Nutrition in amoeba and nutrition in human beings. So nutrition basically is the process which comprises the 5 steps. First one is ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. I am again revising the definition of these processes. Ingestion means the process of taking of food inside the mouth. माउथ में खाने को लेकर जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ingestion. Second one is digestion, the process of conversion of complex and insoluble form of the food into soluble and simple form of the food. Complex means digestion means what? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, जो भी हम खाना खाते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, इनसोल्यूबल फॉर्म में होता है. तो उस खाने को कॉम्प्लेक्स और इनसोल्यूबल फॉर्म से चेंज करना, सोल्यूबल और इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन. थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. नाउ दिस सोल्यूबल एंड डाइजेस्टेड फूड गेट एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम. तो वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो भी खाना यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ. दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन. अब खाना ब्लड स्ट्रीम में तो चला गया, हमें कैसे मिलेगा? तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस डाइजेस्टेड फूड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इनटू द डिफरेंट सेल्स wherever it is required for the growth and development. एसिमिलेशन का मतलब है खाना जो ब्लड स्ट्रीम में चला गया है, ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पास पहुंचे, जहां पर भी उसकी जरूरत है, ताकि एक बॉडी ग्रो कर सके और डेवलप हो सके. लास्ट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन. इजेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब जितना खाना रिक्वायर्ड था, जितना खाना डाइजेस्ट हो गया, वो तो सारा यूज हो गया. जो नहीं डाइजेस्ट हो पाया, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में है, जो वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, वो थ्रोन आउट हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन. So yes, basically student, we have done all these processes in detail. So today I am here to show you 2 videos regarding the nutrition in amoeba and then nutrition in human beings. First we are having nutrition in amoeba. So here is the video for nutrition in amoeba. Nutrition in amoeba. Amoeba eats microscopic plants and animals which float in water. The mode of nutrition is holozoic. In amoeba, nutrition is carried out in 5 different steps, just like the other animals. They are ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Ingestion. When a food particle comes near amoeba, it ingests this food particle by using pseudopodia around it. Digestion. The food is digested in the food vacuole by digestive enzymes. Absorption. The digested food present in the food vacuole is directly absorbed into the cytoplasm of amoeba by diffusion. Assimilation. Food absorbed by amoeba is used to obtain energy for maintaining life processes. Egestion. When a sufficient amount of undigested food collects inside the amoeba, then its cell membrane suddenly ruptures at any place and the undigested food is thrown out of the body of the amoeba. In amoeba, the digestion occurs within the cell.
This type of digestion is called intracellular digestion. Now students, we are here with a video of nutrition in animals. Now see and enjoy nutrition in animals. Our topic for today is digestive system in humans. Digestion is a process in which complex food material is broken down into simpler substances. The digestion of food in humans takes place in the alimentary canal, which is a long tube extending from the mouth to the anus. The different parts of the alimentary canal are buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. Two glands, namely liver and pancreas, also help in digestion. The food is taken in through the mouth. It is chewed and mixed with saliva in the buccal cavity. Saliva is a digestive juice secreted by the salivary glands. The chewed food enters into the food pipe or esophagus and is then slowly pushed into a bag-like structure called stomach. The food is churned in the stomach to further break it down. The stomach also secretes mucus, digestive juices, and hydrochloric acid. The hydrochloric acid kills the bacteria in the food and makes the food acidic. The food then goes into a highly coiled tube called small intestine. The small intestine receives secretions from the liver and pancreas. The liver secretes bile juice, while the pancreas secretes pancreatic juice. The walls of the small intestine also secrete juices which help in further digestion of food. The inner surface of the small intestine has finger-like projections called villi. The villi have extensive network of blood vessels. The digested food is then passed into the blood vessels. The undigested food is passed into the large intestine. It is wider than the small intestine. Excess of water and salts are absorbed here, and undigested waste is passed out of the body through the anus. Now student, at last we are here with the nutrition in ruminants. Yes, we have not done this topic, but after seeing this video we will do this topic, nutrition in ruminants. The ruminants, the grass eaters which chew half digested food or ruminate, are called ruminants. They have special stomachs which are divided into 4 compartments: rumen, reticulum, omasum, and abomasum. In ruminants, half-chewed grass travels from the mouth to the first chamber of the stomach, where it is acted upon by bacteria and other microorganisms. Then it enters into the second muscular chamber.
From there, it is sent back to the mouth to be chewed again. This is what the cow chews when it seems to be munching something thoughtfully. Then we say the animal is chewing cud or ruminating. The rechewed food is swallowed again. This time, it bypasses the first two chambers and enters the third chamber. Here, it is broken down into still smaller pieces. Finally, it enters the fourth chamber, where enzymes act upon it and digestion is completed. Yes, students, I think so you have enjoyed the video that nutrition in ruminants. This is new topic for this chapter which we have not done in our previous video. This is a very small topic which is left in the chapter. So now I am here to explain this topic. Afterwards this chapter will be completed. So next topic is nutrition in ruminants. First of all, we should know about the meaning of the ruminant. सबसे पहले हमें ruminant का मतलब पता होना चाहिए. Ruminant means like cow, buffaloes, horse, which are taking their food directly into their mouth. जो अपना food अपने mouth में directly intake करते हैं. तो ये क्यों फटाफट से खाना खाते हैं? Because they are in hurry. They are scared of carnivores. उन्हें डर लगता है कि कभी कोई कार्निवोर उन्हें खा ना जाए, कभी कोई उन्हें भगा ना दे. सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ईटिंग देयर फूड वेरी फास्टली. ठीक है. सो यस, एंड आफ्टरवर्ड्स दे थ्रो इट बैक अगेन इनटू द माउथ फॉर फर्दर च्यूइंग. So these kind of organisms are known as ruminants, and this process is known as rumination. Actually, they are having a special kind of stomach. Their stomach of ruminants. So yes, it can be of anyone. I have written here as a cow. It can be of any of the animal of ruminant. So yes, basically their stomach consists of 4 parts. The larger one part is the first part, which is known as rumen. Second part is known as reticulum. First part is attached with the esophagus, and then second part is reticulum. Third part and the smallest part of the stomach is known as omasum, and the fourth part is known as abomasum, which is also known as true stomach. How the process of nutrition takes place inside their body? Actually, first of all, whenever they are eating their food, they first enter into their mouth. वो सबसे पहले अपना खाना अपने माउथ में खाते हैं. Then the food is transferred into the rumen through this esophagus. Esophagus pipe के थ्रू वो rumen में एंटर होता है. यस, माउथ के अंदर वो सलाइवा से मिक्स हो गया, थोड़ा सा उन्होंने च्यू किया, लेकिन बहुत ज्यादा च्यू नहीं किया. तो यस, व्हेन इट एंटर इनटू द rumen, it is digested slightly, which change into curd. तो यस, माउथ में थोड़ा सलाइवा मिक्स हुआ, थोड़ा च्यूइंग हुआ, उससे थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ. देन वो र्यूमेन में आया. र्यूमेन में आने के बाद फर्दर थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कड. नाउ दिस कड विल ट्रांसफर इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टमक, विच इज नोन एज रेटिकुलम. वो रेटिकुलम पार्ट में ट्रांसफर होता है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट अगेन ट्रांसफर्ड इनटू द माउथ. तो यस, यहाँ पे एक बार वो रेटिकुलम पार्ट में अपना खाना स्टोर कर लेते हैं. तो यस, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं. फर्स्ट एंटर इनटू द माउथ, देन इनटू द rumen, देन इनटू द रेटिकुलम. तो इन रेटिकुलम द फूड इज स्टोर्ड फॉर सम टाइम. थोड़े से टाइम के लिए वो वहां स्टोर हो जाता है. सो यस, आपने कभी भी गाय भैंस इनको बैठे हुए जुगाली करते हुए देखा होगा. दे आर चूइंग देयर फूड, दे आर मतलब कंटिन्यूसली मूविंग देयर माउथ. वो अपना मुंह घुमाते रहते हैं कंटिन्यूसली एक जगह पे बैठ के. एक्चुअली वो उस टाइम पे कर क्या रहे होते हैं? तो वेन एवर दे आर गेटिंग द फ्री टाइम, दे अपना खाना दोबारा अपने माउथ में लेकर आते हैं, एंड देन वो दोबारा खाना माउथ में आते हैं, देन दे रीच्यू द फूड. वो दोबारा उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं. देन द अगेन सलाइवा विल एंटर इनटू द फूड एंड टू डाइजेस्ट इट फर्दर. तो उसमें फर्दर सलाइवा मिक्स हो जाता है ताकि वो उसको फर्दर डाइजेस्ट कर सके. ठीक है. देन दिस डाइजेस्टेड फूड इज डायरेक्टली एंटर इनटू ओमासम.
बाय पासिंग दिस ruminant रेटिकुलम। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अब जब तुम्हारा खाना माउथ में आया है इस रेटिकुलम के थ्रू, देन दिस फूड डज नॉट एंटर इनटू फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द स्टमक। अब वो तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ना जाके इट डायरेक्टली एंटर्स इनटू द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टमक, दैट इज नोन एज ओमेसम। तो ये जो डायरेक्टली खाना थर्ड पार्ट में जाता है विच इज नोन एज बाईपास थ्रू दीज टू पार्ट्स एंड एंटर डायरेक्टली इनटू द ओमेसम पार्ट, जहां पे वो फर्दर थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है एंड देन एट लास्ट इट एंटर्स इनटू द एबोमेसम पार्ट ऑफ द स्टमक। फोर्थ पार्ट ऑफ द स्टमक में खाना जाता है where some of the digestive juice were secreted, थोड़े से digestive juice secrete होते हैं along with the secretion of hydrochloric acid। यहाँ पर थोड़े से digestive juices and hydrochloric acid secrete होता है so that it can digest the remaining part of the food। यहाँ पर आकर पूरा का पूरा खाना उसकी digestion complete हो जाती है। Then afterwards in process of nutrition, it enters into the small intestine where it is reabsorbed. Whatever the good content are present, so it will reabsorb into the bloodstream, and rest of the part will enter into the large intestine and then enter into the rectum, and then it is passes out or egested out through the body of the ruminant through the anus। वो फिर लास्ट में एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। So this is the process of nutrition in the ruminants। So after doing this process, our chapter of nutrition in animals is completed। I am hoping कि अब आपके सारे concept clear हो गए होंगे। So today's homework is I had already given। हमारा कल साइंस डे था, मैंने आपको पूरा होमवर्क दे दिया है। You have to complete your notebook with chapter 1 and you have to learn book work and notebook work of chapter 1 along with the revision of this chapter, chapter 2। I will give you the soft copy of the question answer of chapter 2 as well। So this is all about for this video। Thank you।